हेलो दोस्तों, वेलकम टू एफपीएल गपशप। मेरा नाम है रक्षित एंड आई एम एक्चुअली डिलाइटेड टू बी जॉइंड बाय भाटिया साहब एंड नॉट be joined by Manan because he got a decent score. But वैसे भी भाटिया साहब is generally better to have you on the pod than Manan. Also because both of us had absolutely disastrous weeks. मैं तो बोलूँगा shitty भी नहीं बोलूँगा, disastrous बोलूँगा. So एक टेल ऑफ वो है जो इस वीक हम डिस्कस करेंगे. बट भाटिया साहब, टेलीग्राम चैनल पे आई आस्क पीपल क्या स्कोर्स थे एंड एवरीवन वाज मोस्टली इन द 40s. अ कपल ऑफ देम मे बी हिट 50s, 30s एंड 40s ही थे. It's just been a fuck all season, man. Like whatever players we remove, वो भी blank करते हैं, जो हम लाते हैं वो भी blank करते हैं, जो 50-50 calls हम लेते हैं, दोनों players blank करते हैं. So it's been an unreal season. Like I have not experienced a season like this, right? Yeah, So neither do you have have I. the same take? Because मेरे को every week it's about 2 or 3 players who get really big scores and उसके अलावा blanks, just blanks. तो मेरे को तो समझ बिल्कुल नहीं आ रहा है क्या हो रहा है सीजन. I agree with you. And हम लोग पॉड से पहले बात कर रहे थे. We've both been playing this game long enough. I think मेरे को खेल के 15, 17, 18 साल हो गए. Probably close to 20 years. ऐसा सीजन नहीं देखा जहाँ पे minimal players points दे रहे. Like who you have doesn't matter. And हर सीजन एक स्टैंड आउट या दो स्टैंड आउट टीम होते हैं. It's usually City dominating the last few years. उससे पहले 1-2 साल कभी Chelsea, United, whoever, or Liverpool the odd season. Like you could get 3 of their players. You could target the bottom clubs and get some points. आर्सेनल को देखो यार, आप बेस्ट एग्जांपल है. ड्रॉन अगेंस्ट वुल्व्स, एवरीवन हैड ट्रिपल कैप्टन गैब्रियल, कुछ नहीं गया. नाउ स्पर्स न्यू मैनेजर बाउंस एंड दे गो बीट देयर लोकल राइवल्स 4-1 और समथिंग. आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. And जिसको goals आप come टारगेट from करोगे. Eze and Gyökeres. Like no one Eze owns 5 them. goals against Spurs this season Yeah. So he scored a hat trick. No and goals not for two. 3 months, and then brace. Yeah, Nothing in between. you should have known. We should have got Eze. Spurs is his favorite fixture. But totally agree with you. Also, you mentioned कि कोई standout team नहीं. I agree with Right. you. But the relative strength of the teams is so high कि Yeah. there are no bad teams also, right? Look at the worst 2 teams, which are Burnley and Wolves. Burnley drew away at Chelsea. Burnley beat Palace उससे पहले, and they're fighting every match, right? They have not given up in any single match. So fair play to Yeah. them. I really can't say कि आप target कर सकते हो Burnley को. And look at Wolves. I think they were unlucky to lose. They got a very, मैं तो बोलूँगा, controversial red card. They missed a penalty. Still lost 1-0 to Palace late on. ठीक है. Yeah. उससे पहले they drew versus Arsenal अपने होम पे, like being 2-0 down. So these are not teams जो गिव अप कर चुकी हैं या फिर विपिंग बॉयज है, राइट? मतलब मैं तो बोलूंगा टॉटनम probably are the worst team in the league. Look at Forest. They were really unlucky to lose against Liverpool. अगर आप highlights देखें तो आपको आइडिया होगा. West Ham, look at their performances over the last 1 month, fighting in every match. They've been really good. 3 का XG भाटिया साहब and did not score against Bournemouth. They are also playing really, really well. तो there are no teams जो bad है. हमने सोचा था ना, हाँ ब्रेंटफोर्ड अपने होम पे, हाँ ब्राइटन को तो हरा ही देगी. ब्राइटन आर नॉट गुड. ब्राइटन ने आगे हरा दिया ब्रेंटफोर्ड को उनके होम पे. सो वी रियली कांट टारगेट एनी टीम्स. और अगर आप प्लेयर्स की बात करो जिनके पॉइंट्स ज़्यादा हैं, दे आर ऑल्सो फ्लॉपिंग. So I don't know what to get. I don't know who to get. I don't know who to target. And I really don't know what the strategy is. I'm totally clueless. Which is a great time, which is a great way to start the pod because people watch our pod to get like tips and all. But I am clueless, bhai. I'll be honest. I have no idea what to do. सर एक टिप है जो मैं स्टार्टिंग ऑफ द सीजन से बोलता आ रहा हूँ. गेट द प्लेयर्स दैट चिपर साहब गेट्स इन. नो स्ट्रेस, इजी पॉइंट्स. And it's a good segue because Chipper साहब की team ये है. And the player you are referring to is Nico O'Reilly, Bhatia साहब, who got 17 points. I have a 2 question goals. actually. Before we analyze Chipper साहब टीम, हम बात करते थे चिपर साहब कार्टेल में. वो कार्टेल में पेप गार्डियोला भी है क्या? Like has he told him that don't sell O'Reilly? अभी मैं उसको मिडफील्ड खिलाऊंगा, अभी मैं उसको स्ट्राइकर खिलाऊंगा. Only चिपर साहब has it. मेरी मिनी लीग्स में ऑलमोस्ट किसी के पास नहीं है. इसके पास मेरी पड़ा हुआ है और कोई बहुत लीग में टाइम किसी से. के पास नहीं है. पड़ा हुआ है. फेयर प्ले टू हिम. पड़ा हुआ है. 17 पॉइंट, 2 गोल्स. आई थिंक द लास्ट वीक ही गॉट अ गोल. दिस वीक ही गॉट 2 गोल्स. आपने कहा ना कि 7% he's playing alongside Haaland. आई थिंक he's playing in front of Haaland now. जो पोजीशंस ले रहा है बॉक्स में. हालैंड को बहुत डिफेंडिंग करनी पड़ी थी. एंड ओराइली इज एक्चुअली द वन जो बॉक्स क्रैशर की तरह ऑपरेट कर रहा है. Yeah. 2 goals from him. And Insane. that's it. That is the difference between our teams and his team primarily. Also, Verbruggen का clean sheet है. Verbruggen.
Yeah, away to away from Brentford. home, Brentford. It doesn't make sense. Blanks for And he captained Haaland, so 6 points there. 6 points there. Rice, Defcon, ब्रूनो, थियागो, सार, एंजो. मैं सार लाया अपनी टीम में क्योंकि मनन सर लाए थे. जैसे ही मैं लाया, आई ब्रोक हिम. कुछ नहीं करा. Nothing. I think the advice is get those players जो मनन लाते हैं and रक्षित नहीं लाते. It's an and condition. Absolutely. It's not an odd Absolutely. condition. If Manan has a player and I am getting that player, or if I have that player, don't get him. Get the Yeah. players जो मनन के पास है, मेरे सिर्फ पास मनन नहीं के है. पास है. हाँ, exclusive to मनन. सिर्फ मनन के पास है. Yeah, cool. This is me with a bench boost. Smashed it into the 40s this week, flying. Crazy. It feels great to get a red arrow on a when you are on a chip. I don't mind the bench boost again, but भाटिया साहब, सनदरलैंड ने पूरे सीजन 3 गोल खाए होम पे. I don't think ज्यादा so. खाए. They were unbeaten. हाँ, एक में नहीं खाए, but हाँ, max they पूरे concede was 2 in a season game. I They're don't very think they have solid. conceded like more than 2 goals. No. And Fulham के against they decided to concede 3 goals. So Alderete gives me 1 point with no defcons. It was, मतलब Sunderland fans का मैं देख रहा था, by far their worst performance of the season, by far. They are in total agreement कि इससे बुरा हम पूरे season नहीं खेले. So the one week I chose to bench boost, this is the week they decide to concede 3 at home to Fulham. Raul Jimenez is scoring braces away from home. Timber got an assist, but yellow card and sub before 60 minutes on my bench boost. Iliman NDI got 10 or 11 defcons or something. Blank at home to United are clipping clean sheets away from home, which is insane. Dubravka is fine, 2 points. Sanchez had more saves than Dubravka. मुझे लगा save point दे देगा, but Sanchez had more saves than Dubravka at Stamford Bridge because Chelsea decided to get a red card. So 8 points on a bench. The bare minimum score I basically bench boost में, which is 8 points. But the rest of the team did nothing. Blanks from Bowen got Ekitike, the blanks defcons. from Thiago, Bowen got defcons. He's Rice been a got best pick this defcons. How the fuck did he not score? West Ham did not score from 3xG against Bournemouth. Ismail Assar blank, Rogers blank. Bruno Fernandes got a late yellow card injury time में, जिसकी वजह से वो एक clean sheet point भी नहीं आया. Nothing, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया. I think he had 0 chances created and 0 shots, which is crazy. His XGI was less than 0.1. XGI. Yeah. Because Everton, it was a very even match जो एक moment पे decide हुआ था, and United won it. Munoz got me a 9-pointer. Nothing from Guehi, nothing from Gabriel, and Vicario though is not even a player. I don't even count him. 41 points. Worst transfer this season. Absolutely crazy. I got in a keeper from a team जो goals multiple खाती है और वो keeper saves ही नहीं करता है, which is like the best combination to have when you get a keeper. Bhadi sab, you got 35 points. I have outdone you this week, so 35 points. Well, frustrating point ये भी नहीं कि I captained the wrong player or captained a United player. Chalobah, how do you concede a 94th minute goal, which I think he was on course for like 1 or 2 bonus as well, or 8 या 9 defcon भी उसके, obviously तो कुछ भी नहीं मिला, ना clean sheet, ना defcon, so 2-pointer there. Last week Nunes got sub before 60 minutes on a clean sheet. That is so frustrating, man. That is like heights of bad. Like आप क्या बोल सकते हो? You have a player जो team clean sheet रख रही है, he gets subbed for no bloody reason. So वैसा ही, I think the only return this week is Haaland with an assist out of 11 players, and Mbeumo with an assist. Sorry, I forgot Mbeumo. And Rice with defcons. So 2 assists और 1 defcon मिला है from 12 players including my captain. मतलब क्या बोलूं? Mukiele injured भी हो गया. चलो we'll discuss एक बार आगे. Game week rank. People want to feel do we good. even have these number of players? I don't know. I'm probably the last this week. I'm pretty sure कि 10 million real players तो नहीं है. There are definitely a lot of bots here. Can't even beat dead teams nowadays. I'm 3.8 fucking million, man. I'm 3.8 fucking million. And I've been on the same You're rank. in the top 40 percentile, yeah. You have been on the same rank. I have been on the same rank since this century began, I think. कोई मूवमेंट ही नहीं है. मैं तंग आ गया हूँ वो 3.7 3.8 देख के, और आप वो 700 समथिंग ही मूव करे आ रहे हो बस. सेम. I'm 700 800 500 600 उधर ही घूम रहा हूँ. Let's move on.
Yeah, I don't know why Manan put this graphic. I don't know what to say about these players. They're all good players. They क्या can all score are points. are people looking But at कौन these कब players to देगा, get for their teams? like, कौन कब point देगा नहीं पता. So take your pick and hope to get lucky. Like Rogers कब से हमारे चलो आप टीम मुझे में ये कुछ बताओ नहीं कि कर पाया. प्लेयर्स ये लोग प्लेयर्स हटा रहे जो ला रहे हैं वो हटा क्या रहे हैं? I think Rice हटा रहे हैं, Enzo हटा रहे हैं. Firstly, But I don't firstly think before we get yeah. into these players, should people remove Rice and Enzo sort of मेरा players? वही सवाल था कि I don't think he's that urgent to sell right now. एक दो हफ्ते बाद भी बेच सकते हो because he's guaranteeing you 4 points. और वो काफी प्लेयर से 2 पॉइंट ज्यादा है because majority of the players सिर्फ 2 पॉइंट. Like obviously the potential for Hall there. Hall है, Wilson में है, शायद उटारा में ज्यादा है. Definitely more than a Rice, but Rice is consistent. और अगर assist दे दिया, which is like a massive haul in today's FPL, like a assist, तो आप 8-9 पॉइंट की बात कर रहे हो. So I'm not sure Rice is that urgent to sell. What about Enzo? Do you think he's a sell? Because I feel Enzo और Chelsea are a team जो थोड़ा ना उनको सूट करता है जब टीम्स उन्हें अटैक करती हैं. Their good performances generally come when they are facing like थोड़ा good teams. And Yeah. मतलब this will be classic FPL. If people remove Chelsea Enzo and beating Enzo Arsenal. doing well. या फिर Enzo starts doing well, right? In these sort of matches. Possible. He's starting defcons ले रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है. बिल्कुल भरोसा नहीं है, right? कर सकता है वो. I think Enzo ka, if you can bench him this week, just away to Arsenal, Baki fixtures are not that bad. Yeah, like away to Villa are not doing much Not at bad. home. It's not bad at all. Home to Newcastle is a good fixture, I feel. Uske baad, and away to Everton is again not bad. So it's not the worst run, but obviously multiple blanks hai. Palmer खेल रहा है better. Penalties Palmer को मिल रही है, goals João Pedro को मिल रहा है. So Enzo is not really involved. Yeah. But then you see his numbers, he's still posting 0.5 plus XG in most games. So I'm not sure holding him is the worst pick, especially जब आपके पास दूसरे blankers होंगे 31 में जिसको आप निकाल सकते हो. You can definitely sell Enzo, but I don't think holding him and playing him is the worst shout. Totally. And look at some of these players, right? Harry Wilson मैं मान सकता हूँ, ठीक है, इज अ वेरी गुड रिलायबल प्लेयर जो पूरे सीजन भाटिया साहब जस्ट कर रहा है. आई थिंक हैरी विल्सन इज समवन जो आप इररिस्पेक्टिव ऑफ द फिक्सचर्स अपनी टीम में कंसिडर कर सकते हो, ला सकते हो. एंड सबसे ज़्यादा अपील ये है कि बर्नली के साथ मैच है उनका ब्लैंक गेम वीक 31 में. आई एम नॉट श्योर दैट्स लाइक द बेस्ट फिक्सचर, बट इट्स वन ऑफ द बेस्ट फिक्सचर्स इन दैट वीक. एंड दिस वीक ही इज प्लेइंग डॉक्टर टॉटनम, हु आर मेरे ख्याल से द वर्स्ट टीम इन द लीग. सो या but Ryan, new in the league, he's looked exciting, but क्या आप Ryan type के प्लेयर पे जाओगे? क्योंकि Tavernier is back, he will be on penalties, right? He came off the bench. Don't you think Tavernier is someone जो Ryan से better option हो सकता है for the next few weeks अगर आपको लाना ही है अभी तो? Better हो सकता है, but Tavernier के साथ दो concern है. Firstly, he may not play 90 or start immediately because I think half an hour खेला last game या उससे भी कम खेला. I'm not sure कितना खेला. Yeah. And he can also play deeper in midfield. So Ryan आपको I think better goal threat from open play देता है, but then Tavernier does have set pieces and especially penalties. So after this week अगर आप पूछोगे तो I think probably Ryan better option, Tavernier better option है. But if you're going this week punt करना है तो Ryan, but if you can hold off, I think Tavernier might be the better pick with set piece potential and more of a reliable pick, right? Yeah. Utara versus Sade. Where do you stand on that? Shard is back. I think it's a coin toss यार. आप शाडे लाओगे तो उटारा पॉइंट देगा, उटारा लाओगे तो शाडे देगा, दोनों लाओगे तो ब्रेंटफोर्ड बिना स्कोर के हार जाएगी. So that's how the season is going. I had Utara I think earlier and he's okay, but he wins penalties for Thiago apparently. Yeah. जो बहुत टाइम से किया नहीं उसने. बहुत टाइम से नहीं किया है. But the fixtures are there, right? I mean, you can't blame anyone for punting on a Brentford player. Burnley, Bournemouth, Wolves, Leeds. All four are good games from an attacker's point of view. So I think get one of the picks and hope to get lucky. Yeah, I would say Shada is a better goal scoring option. Utara is a better assist option. Shada बहुत frustrating player है, बहुत chances miss करता है. Utara आपको bonus वगैरह दे सकता है अगर वो assist देता है तो. Utara is definitely cheaper, so that's also a factor. But हाँ, I agree with you कि दोनों ही मतलब equally good options हैं, I guess. Like जो भी आप लोगे उसका दूसरा opposite वाला play अच्छा करेगा. Soboslai is going to play right back. Every player जो right back खेलता है लिवरपूल के लिए injured हो जाता है. But he somehow finds ways to give you points, right? Yeah. But how do you like him from an FPL point of view? Looking at the fixture.
Yeah, he's popular in the community, but I don't really like him because you're relying only on penalties. आप एक्सपेक्ट करो अभी वो भी पता नहीं साला लेगा कि साला सोबोसलाई लेगा, लेगा. पेनल्टीज में साला नहीं लेगा. होगा, साला लेगा. हाँ, हाँ तो देन उसका अपील और भी कम हो कॉर्नर्स, जाता है, फ्री स्पेशली किक्स. प्लेइंग राइट बैक. कोई अटैकिंग थ्रेट ओपन प्ले से नहीं रहेगा. Rogers also flatters to deceive. यार Villa over the last few weeks उनका फॉर्म भी खराब हो गया है. Rogers is given as what, like 1 or 2 goals in 6 games. That's not Yeah, really that much. I think 8 goal, 8 assist है. And Palace fixtures against not. I think Tagul. That's it. Wolves away is not going to be an easy game for Villa. Yeah, Chelsea home and United away is definitely not, and West Ham are not also easy. fighting for their lives. So I'm not sure Rogers is a buy right now. Like we are stuck with him, so we'll probably hold him till 31. But I think I would rather buy a Wilson or a Brentford midfielder right now ahead of Rogers. Problem with Rodgers is कि Villa are struggling right now because they have no midfield. जब से कमारा टीलेमंस दोनों इंजर्ड हो गए ना, बहुत सफर कर रही है विला हैव बिकम हाफ द टीम बिकॉज कमारा और टीलेमंस जब दोनों खेलते हैं ना, विला आर अ कंप्लीटली डिफरेंट टीम. सो दे आर रियली स्ट्रगलिंग एंड आई एक्चुअली फियर फॉर देम अगर आप टॉप 5 की बात करो तो. सो Yeah, I think रॉज they can easily fall out. They're still in Europe as well. So स्टिल इन यूरोप. बहुत सारे fixtures हैं and their form is dropping off at the wrong stage. या आफ्टर दिस वीक इफ यू वांट टू सेल हिम देन कोई प्रॉब्लम नहीं आई थिंक बहुत ज़्यादा. इट्स जस्ट वन ऑफ दोस थिंग्स. या मे बी आप वुल्व्स के लिए रखोगे वो चेल्सी अगेंस्ट मार देगा, फिर यूनाइटेड मार देगा, फिर आप वेस्ट हैम के लिए लाओगे और वो ब्लैंक करेगा. Sir, I'll be very happy if he scores 1 goal in the next 4 games. I'll take it. Oh man. Okay. Let's. So हमारा एक प्रिडिक्शंस गेम है भाटिया साहब एंड लास्ट 2 वीक्स मेरे काफ़ी सही रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रिडिक्टिंग कि कितने गोल्स और क्या रिजल्ट होने वाला है. बट आई एम नॉट एबल टू प्रिडिक्ट कि उन मैचेस में गोल करेगा कौन, क्लीन शीट आएगी नहीं आएगी या असिस्ट कौन देगा. सो वी कैन लुक एट दीज नंबर्स. हम हर वीक देखते हैं ये कि ये टीम इतने गोल मारेगी, ये टीम इतने गोल मारेगी. आर्सेनल ने 4 मार दिए बट ग्योकेरेस एजे ने मारे. लिवरपूल ने मार दिया गोल बट मैकैलिस्टर ने मारा है. मैन सिटी ने मार दिए 2-3 गोल बट निको रैली ने ब्रेस मार दिए. मतलब एस्टन विला का गोल टैमी अब्राहम ने मारा है. लुक एट द टीम ऑफ द वीक राइट. यू हैड Yeah. राउल हिमेनेज, मैकैलिस्टर, रैंडम प्लेयर्स. मतलब आई थिंक 2 players had more than 10% ओनरशिप इस बार जो टीम ऑफ द वीक थी. सो यू डोंट नो एग्जैक्ट ग्योकेरेस एजे ये सब प्लेयर्स थे बेसिकली. सो we can look at these numbers and we can say हाँ यार ये इस टीम का अच्छा मैच है बट उन टीम्स में गोल कौन मारेगा वो समझ नहीं आ रहा है. राइट. आर्सेनल है फॉर एग्जांपल, आर्सेनल चेल्सी राइट. डू वी कीप डबल डिफेंस, डू वी कीप राइस, डू वी बेंच टिम्बर, डू वी सेल राइस. मतलब क्या करें आर्सेनल का राइट. मतलब दे आर नॉट कीपिंग क्लीन शीट्स. गोल मार रहे हैं, पता नहीं कौन मार रहा है, कहाँ से गोल आएगा नहीं पता आपको आर्सेनल का, फॉर श्योर नहीं पता आपको. तो फिर क्या करें विद आर्सेनल प्लेयर्स राइट. मतलब हमारा लेना देना है विद एफपीएल प्लेयर्स जो एक टीम से आ रहे हैं रादर देन कि एक टीम कैसा कर रही है. व्हाट डू वी डू विद टिम्बर, राइस, ऑल दीज प्लेयर्स. क्या करें इनका भाटिया साहब. हम क्या करते हैं ना, we've got so used to these goal and clean sheet odds. हम 35-40% क्लीन शीट ऑड देके खुश हो जाते हैं, हर हफ्ते प्लेयर रखते हैं. सो कॉल्ड बेस्ट डिफेंस इन यूरोप. भाई डबल गेम वीक में पॉइंट्स नहीं दिए, लास्ट गेम स्पर्स के अगेंस्ट क्लीन शीट पॉइंट्स नहीं दिए, वुल्व्स के अगेंस्ट पॉइंट्स नहीं दिए. लाइक क्या करोगे वो 40% चांस का जब व्हेन इट्स नॉट कन्वर्टिंग. नाउ आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ दे विन लाइक 1-0 और क्लीन शीट रखते चेल्सी के अगेंस्ट बिकॉज आर्सेनल इज दैट काइंड ऑफ टीम. आर्टेटा वैसा मैनेजर है. बिग गेम्स में काफी नेगेटिव हो जाता है, पार्क सबास set pieces पे rely करता है. He knows Arsenal are a better team than the others, at least on set pieces, and that is where he tries to gain the advantage. So players like Gabriel आप आराम से रख सकते हो. Timber probably could be sold, and Rice I think जो एक साइड से set pieces लेता है, Defcon potential लेता है, I'm not sure इतना urgent sell है. So Arsenal assets आप रख सकते हो ये हफ्ते. Next week Brighton है, I think decent game for them, not the worst team to play right now. उसके बाद Everton है. So Arsenal assets can be sold after 30 also, but then I understand Brentford के fixtures देख के या Fulham के fixtures देख के आप you're tempted to take a punt, so it's not a bad option either, right? So Arsenal के set piece goals have come down. So do you Yeah. think teams have worked them out? क्योंकि अब नहीं मिल रहे हैं असिस्ट साका राइस को, वहां से नहीं आ रहे हैं डिफेंडर के गोल्स. कुछ तो हुआ है चेंज राइट. I think they might have been
teams might have caught up on it, but you still can't rule it out, right? They get plenty of corners, and जिस तरह से वो लोग corner celebrate करते हैं ना जब corner मिलता है, as if they won a penalty. इतना जोश है उनमें कि corner मिल गया, so they are pretty confident. And Rice का set piece delivery is quality from one side. He's on free kicks as well, so I think Rice is a decent hold still. But then हाँ, आप expectations कम रखिए, season भी वैसा है. Yeah. Average 40-45 points हर हफ्ते आ रहे हैं. This week also the average was 45. I don't know how. Van Dijk, But João my, Pedro, uh, fucking my João que- Pedro. My question to you is, do you think Liverpool Forest is going to be that sort of game? 2.4 plays 1.06. Liverpool West I Ham. don't think so. Yeah. I don't think Yeah. West Ham are that bad. They're actually playing really well right now. मतलब मैं अपनी टीम देख रहा था and there is no way I'm benching Jared Bowen. Absolutely no way, especially after looking at West Ham and looking at how Liverpool defended against Forest last week. Like, I'm pretty confident they'll concede in this match क्योंकि बहुत ही लकी क्लीन शीट थी लास्ट मैच. Sunderland में मैं बोल सकता हूँ हाँ चलो ठीक है. They were decent defensively. Sunderland were like sort of important going forward. But Forest के against Liverpool defensively looked really shaky. Very lucky to get a clean sheet. Very lucky Van Dijk got that haul. मेरे हिसाब से तो कभी कभी हमने देखा भाटिया साहब की अवे फ्रॉम होम टीम्स निकाल लेती हैं सॉर्ट ऑफ 1-0 बट होम पे देयर इज लाइक एन एक्सपेक्टेशन फॉर टीम्स टू अटैक मोर especially at Anfield for a team like Liverpool. They have struggled against like sort of lower ranked teams at home. कितने मैचेस हमने देखा है इस सीजन लीड्स वीड्स अगेंस्ट फॉर एग्जांपल. तो मुझे लगता है स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा स्पेशली द वे वेस्ट हैम के जो काउंटर अटैकिंग थ्रेट है फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम समरविल हु इज प्लेइंग रियली वेल राइट नाउ. मार्टिनस फर्नांडेज, जैरेड बोवेन, all these players are playing really well. मुझे लगता है especially with the fullbacks coming back, Wan-Bissaka and Diouf, उन बहुत ज़्यादा improve हो गया defensively also going forward also. तो मेरे को तो कोई डाउट नहीं है कि वेस्ट हैम मतलब जैरेड बोवेन मैं खिलाऊंगा. मेरे को क्लीन शीट बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है इस पर्टिकुलर वीक में. अगर आप गोल्स स्कोरिंग की बात करो अगेन मतलब आई हैव एकेटिके, मेरे को कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो करेगा. आई थिंक 5 या 6 बिग चांस मिस करिए लास्ट 3 मैच में जब से मिला हूँ. वर्ड्स की इंजरी पे पता नहीं है. सोबोस्ले राइट बैक खेल रहा है. साला इज let's just say finished as an FPL asset. So where do the goals come from? Like random, I don't know. 2.39 के odds मैं तो agree नहीं करूँगा. Gakpo or Gravenberch मारेगा. Yeah, it just screams like a 1-1 or a 2-1 sort of match to me. Yeah, it's a very cagey match. I'm not sure this is the best week to get in Liverpool attackers for sure. Because West Ham are actually pretty good. Yeah, and actually क्या लाओ right? People are looking at Ekitike. I own Ekitike. You have owned Ekitike. And we just have to hold him through these bad runs and just keep him, I guess, because he's very frustrating to one. Keeps missing big chances. He'll score a brace in one of the games, but you don't know when. Yeah. United पे आते हैं भाटिया साहब. क्रिस्टल पैलेस के साथ मैच है. I think this is a good match for Palace in the sense कि सूट करेगा पैलेस को. जो उनका स्टाइल ऑफ प्ले है वो सर्टेन मैचेस में सूट करता है. जैसे ब्राइटन अवे सूट किया था, वुल्व्स एट होम सूट नहीं करा, बर्नली एट होम सूट नहीं करा, बिकॉज पैलेस आर दैट सॉर्ट ऑफ अ टीम जो ट्रांजिशंस पे थ्राइव करती है. सो विद हैविंग सार एंड मुनियोज मेरे को तो लगता है कि देयर इज अ चांस कि वो गोल मारे इस मैच में. वुड यू एग्री? Yeah, definitely. I don't think United clean sheet is nailed on by any means. But last 2-3 हफ्ते से United का attack has also not been firing as it was previously. तो attack भी थोड़ा I think blunt हो गया आप बोल सकते हैं. They are playing a bit more conservative. So chances भी कम concede करते हैं and they are creating also fewer chances. Under Amorim कैसा था? They were creating a lot of chances and conceding a lot of chances as well. So Carrick under at least the last couple of games they become tighter, more compact and कम chances create करे. So I'm not sure 2 plus XG is fair. इतना last 2 game के basis पे तो नहीं लग रहा है. But then they are playing well. Confidence है team में. Cunha's looked good. Mbeumo's output देता है. And Šeško has been really sharp from the bench. So United से आप goals expect कर सकते हो. May not be a 2 or 3 plus goal game, but they should score 1 or maybe 2. Home पे है, that's the big thing. You do expect United home पे they will push. So if you have these players, then probably keep them. और I think clear हो गया United में कि who are the players to get. It's probably Bruno and Mbeumo. That's it. No third player, right? Cunha I don't mind Šeško actually. He's looking really sharp. And he's not even starting, I think he'll start this one and Amar gets benched. Achha. I'm not Carrick, so I don't know, but I'm just guessing. Yeah. But he'll start either this one or the one after because इसके बाद वाला midweek वाला है. So
3-day turnaround as well. So, and he deserves to start because he's been playing really well. He's got those crucial goals. And आपने देखा होगा कि जब भी सेस्को आता है, it's either Cunha who's getting subbed off or last game में Amad हुआ था. So Bruno plays a whole 90 and Bruno plays a whole 90. So those two are obviously better picks. But people who want a fun punt, आप जा सकते हो Sesko पे because he's looking sharp. And एक और pick है from the defense who looks good is Dallo. He gets into बड़ा crazy बढ़िया। positions, short लेता है, box में आ जाता है. I don't really like the player, but FPL wise for the next 4 weeks he could be a good pick. And really good for bonus. He gets Yeah. bonus points बहुत ज़्यादा। Yeah. City Leeds, do you see this as like a banana skin fixture? हमने last time Arsenal के लिए बोला था they smashed like 4 past Leeds, but that was like a one-off, an aberration. But this will be tricky, right, for City away from home. I think Leeds are a very good team. They're not a bad team at all. Their league table, shayad, obviously league table doesn't lie, but they are not in. They don't get thrashed every game, and at home, काफी competitive hai. They got thrashed away. I think 3-0. We triple captain Haaland for this one, so obviously we got nothing out of that. But at home, I think Leeds will give City more of a game, and I feel like it's gonna be like a 1-goal win for City, 1-2, 2-3 type of game. It could be tricky. It could be a banana skin, like you said, title race hai. And Leeds also need the points to survive, right? So they're not going to make it easy. Yeah. Let's talk about 3 teams, Bhatia साहब, जहाँ से players हम देख रहे थे. Look at Bournemouth, Brentford and Fulham. Roughly the same goal odds, right? 1.75, 1.76, 1.62. But अगर आप इस week के fixtures देखोगे तो that's why people are talking about Utara and Sade and Tavernier and Ryan and Harry Wilson. But आपके हिसाब से best fixture किसका है? Would you say Fulham because they're playing Tottenham? Yeah, I think defensively Fulham के better fixture है. Like you would expect more chances of them keeping a clean sheet, even though either 28% बता रहे हैं, and Fulham is not known for keeping clean sheets. But attacking wise, I think Bournemouth and Brentford, आप उन्हें ज़्यादा target कर सकते हैं. Sunderland is one of the few teams. So मुझे लगता है personally they are on the beach right now because they are safe and they have achieved their objective of staying up. They have injuries. Mukiel is also injured. I'm not sure what's happening with Xhaka. Is he back yet? I'm not sure he's back yet. Yeah, that's So the big they thing. are struggling and Bournemouth. That's that's the big thing. One of the reasons I decided to bench boost is because Xhaka was back, but he did not start. That's the problem. Yeah. And he came second half में. Xhaka is very important for Sunderland. बहुत important है उनके लिए. Yeah, and I think Xhaka start करेगा तो वो defensively थोड़ी better मेरे ख्याल से automatically हो जाएगी. So I won't say exactly beach पे है, but उनका away record has not been good anyways. तो मुझे लगता है बोर्नमथ के लिए अच्छा मैच है. एंड जाका इट विल टेक हिम लाइक अ वीक और सो टू गेट अप टू लाइक फिजिकल फिटनेस आल्सो. मुकिएले आपने बोला ऑफ इंजर्ड है. अल्डरेटे को थोड़े क्रिटिसिज्म मिल रहा है बिकॉज इज नॉट इन फॉर्म. तो आई थिंक इट्स अ डिसेंट मैच. बर्नली अवे आई थिंक इट्स अ गुड मैच फॉर ब्रेंटफोर्ड भाटिया साहब बिकॉज बर्नली विल टारगेट दिस मैच फॉर अ विन. तो मुझे लगता है ब्रेंटफोर्ड को चांसेस मिलेंगे. टॉटनहम आर शिट, जस्ट स्क्रैप. दे डोंट हैव द प्लेयर्स. डिफेंडर ही नहीं है. ड्रागुसिन, अगर ड्रागुसिन स्टार्ट करा तो फुलम 2 से 3 गोल मार रही है पक्का. ही इज दैट बैड. तो मेरे को लगता है तीनों के अच्छे मैचेस यार. मतलब आई एक्चुअली फील कि रादर देन हैविंग सिटी, यूनाइटेड, चेल्सी, आर्सेनल मिड्स, अगर फ्री हिट करना है किसी को तो रादर है बोर्नमथ, ब्रेंटफोर्ड, फुलम मिड्स. आई थिंक दे ऑल माइट डू डिसेंट दिस वीक. Yeah. बाकी क्या This week for sure. But fixture तो हम लोग target करते हैं, but on the day who performs Yeah. we never know. Like you would expect Brentford to score a couple of goals. It could be that Dubravka keeps a clean sheet. कुछ नहीं. Yeah. Exactly. Let us go to our teams, Fadi, because nothing more to say. Who, मतलब, what on Team देख के भी what nothing basis on what basis do we remove certain players from our team, and on what basis do we get certain players from other teams? Like I don't know the answer. So आपके क्या plan है, आप बता दो. Yeah, honestly, I've not even seen my team the whole week. Last week की team पड़ी है ऐसे ही, so captain पे sure नहीं हो. It could be Bruno, it could be Haaland. Like I want, पहले captain की बात कर लेते हैं. I want to captain Bruno because I feel it home game है शायद higher potential fixture है, but then he's not played really well the last couple of games, especially the Everton game. कुछ भी नहीं किया. His XGI was less than 0.1, 0.2. And हम Bruno से usually expect करते हैं कि even if he doesn't have goal threat, बहुत सारे chances create करता है. Defcon potential होता है. He's nowhere close to Defcon as well. And Haaland, हम बात कर रहे थे, he's actually coming deeper to get more touches of the ball, help the team out defensively. O'Reilly and Semenyo are playing for the forward line. So, not sure. I sold Haaland.
कोई फियर नहीं था मुझे लास्ट मैच में, मेरे को फियर सेमेन्यो से आ रहा था, क्योंकि मेरे को दिख रहा था हालैंड से मुझे कोई डर नहीं लग रहा है आई टेस्ट वाइज, मेरे को डर था कि सेमेन्यो ना मार दे, इतना Yeah, डीप आ रहा था हालैंड। I think Semenyo and O'Reilly are probably the best City attackers. या विच इज Would इनसेन। you would you still get in one of them, even though you know they might blank in 31? योर केस Like, में नो, बिकॉज यू हैव नूनेस, yeah, एंड सेमेन्यो ऑल्सो नो, बिकॉज आई थिंक जो हमने टीम्स की बात करी थी, दे, आई एम नॉट सेइंग सेमेन्यो वोंट डू वेल, आई एम सेइंग दोज प्लेयर्स कैन मैच हिम ओवर द नेक्स्ट 4, yeah, स्पेशली कंसिडरिंग कि ब्लैंक का चांस है। ओराइली अगर कोई ला रहा है तो मना नहीं करूंगा, बिकॉज ही इज लाइक चीट कोड इन द गेम राइट नाउ, प्लेइंग लाइक अ सेकंड स्ट्राइकर, बट वो yeah, हर मैच में नहीं करेगा भाटिया साहब गोल, ही इज नॉट, नो वन इज गोना स्कोर इन एवरी मैच, yeah, एंड होम मैचेस में ऑब्वियसली सिटी आर ऑन द फ्रंट फुट मोर, ही गेट्स मोर स्पेसेस, वो डोमिनेट करते हैं पोजीशन, टीम्स डू सिट बैक, जहाँ पे प्लेयर्स लाइक ओराइली को थोड़ा थोड़ा पिकअप करना मुश्किल होता है। अवे मैचेस में ही विल हैव टू डू मोर डिफेंसिव वर्क, अगेंस्ट लीड्स ही विल हैव टू डू मोर डिफेंसिव वर्क, राइट। सो मुझे लगता है कि होम मैचेस में मैं थोड़ा और प्रेफर करूंगा ओराइली को लाना, तो मे बी दिस इज नॉट द राइट वीक टू गेट हिम, बट हु नोज पेप गार्डियोला but से कैसे यूटिलाइज करे। एक और चीज आप देखोगे ना, जो सिटी के 3 फिक्चर्स है, वन इज लीड्स अवे, आई थिंक नेक्स्ट इज फॉरेस्ट होम एंड वेस्ट हैम अवे, ऑल 3 टीम्स आर फाइटिंग फॉर देयर लाइव्स एंड ऑनेस्टली या ऑल 3 टीम्स आर नॉट प्लेइंग बैड राइट नाउ. फॉरेस्ट भी नो बहुत ठीक खेल रही है, वेस्ट हैम तो बहुत ही अच्छा खेल रही है, दे बीन अनलकी नॉट टू या विन द प्रीवियस गेम, बट दे आर इन फॉर्म. सो all 3 of the fixtures they might look like small teams, but I don't think they're thrashing. Easy fixture तीनों नहीं रहेंगे. So maybe not attack या City and hold what you have, and you can probably, I think I can probably sell Nunes as well. I don't see City keeping a clean sheet this game, so might sell Nunes. But the problem is I have Mukiele who's injured. उसकी खबर नहीं है कि 31 खेलेगा कि नहीं. Tarkowski is rubbish. Everton have also not kept a clean sheet for like 5-6 game weeks. Same with Chelsea as well. So बहुत सारे holes है team में, and I don't really, I'm not really confident on the replacement, right? So I might या do something like एक defender change कर लो और एक midfielder change कर लो, but that will be again optimistically with not much confidence. thoughts on like a Palace defender Munoz, because Munoz is Munoz, right, and I know he might have a blank in 31, but he can always, I think he scored at Old Trafford in the past also. Yeah, I like It's Munoz a sort of lot like as a that. player, but if I had to get a blanker जो 31 में नहीं खेल रहा है, I think I would go for O'Reilly O'Reilly. rather than Munoz, because he's actually playing for a better team defensively right now. Slightly better fixtures in Palace. Palace have slightly tougher games and better goal threat, right? He's playing closer to goal. So अगर आप ऐसा punt ले रहे हो तो might as well get O'Reilly. But I'm not sure both are the worst shouts. कोई defender कुछ नहीं कर रहा. Like my defenders are definitely not doing What Bhatia sir, what about the best defender in the game who also has a fixture in 31, who also has a great match at West Ham at home? Virgil van Dijk. I Probably going to actually score thought and keep a about clean getting sheet him. again. I just thought of getting him so that he doesn't hurt my week. Point शायद दे नहीं दे मेरे लेके आने के बाद, but then just get him. You'll get four games of 490 minutes, maybe a couple of defcons, maybe one clean sheet, and who knows? I think he's still a better option than Tarkowski and Chalobah right now. So can't do worse Yeah. than What that. about Enzo? Is Arsenal that tough a fixture now? We don't know what's an easy fixture right now or what's a tough fixture. The league is in इस साल ऐसा लीग रहा है कि हम बात कर रहे थे कि the best teams have become slightly worse and all the others have become slightly better. So the gap between the best and the worst has reduced. So top 4 की आप रेस देख लो, there are like 3 or 4 teams fighting for the top 4 and none of them are very consistent. Like United have hit a run over the last 5 or 6 games, but उससे पहले not consistent. Chelsea still hit and miss. Villa dropping points. So आप किसको टारगेट करोगे? Arsenal में we have double defense, but we're not getting the clean sheets. City में we have Haaland, we have a defender not getting the clean sheet, or Haaland is not doing much. Like which team से आप player लाओ? अभी जो fixture trend चल रहा है, like we spoke about the likes of Bournemouth, Brentford, and Fulham, which we all know those teams are super unreliable. Like some games they might score 2 goals, couple of games they might score a goal, or they might not even score. So we are just punting and hoping for the best, right? एक और सवाल है आपसे,
do you see, मतलब look at the captaincy, genuinely look at captaincy returns. आप हर टीम के जाके आप अपनी टीम, लोग अपनी टीम में भी देख सकते हैं over the last few weeks, 8 to 10 weeks बोलूँगा, largely been underwhelming, Yeah. right? Whoever you captain, because we have been captaining Haaland, Bruno and Gabriel एक blank game week में, but अगर आप देखोगे it's been underwhelming. So would you say कि थोड़ा punts बनते हैं captaincy में भी now? अगर आपको थोड़ा कैच अप करना हो, फॉर समवन लाइक मी फॉर एग्जांपल, वुड यू go against like a Haaland or a Bruno, maybe go for other players as punts every week? Because captains भी return नहीं कर रहे. One of the reasons why average is so low is because captaincy is also not hitting, right? यार बिल्कुल पंच ले सकते हो, बट प्रॉब्लम है कि हम प्लेयर के पॉइंट्स ही प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे, सो इट्स हार्ड टू कैप्टन समवन जिस पे आपको कोई भरोसा नहीं. लाइक दिस वीक थियागो आई थिंक इज अ परफेक्टली फाइन कैप्टनसी चॉइस, बट बहुत कम लोग उसे कैप्टन करेंगे बिकॉज फॉर्म में नहीं है. बट विल यू बी सरप्राइज इफ ब्रेंटफोर्ड काउंटर अटैक देयर वे टू एट Burnley, बिकॉज जैसे आपने कहा Burnley विल टारगेट दिस एज अ मस्ट विन गेम फॉर देम, स्पेसेस मिलेगी. इट कुड बी एनी ऑफ थियागो, शार्डे और उटारा हॉलिंग इन दिस वन. सो Thiago could be a great captaincy shout on penalties as well, but will we go there? Not so sure. आपको तो करना चाहिए. I might consider doing that as well. The thing is कि Brentford might score 3 goals and Sade Utara might get everything. You know, that's the sort of season वैसा ही चल रहा है. Season जा रहा है. Exactly. So finally, what transfer are you considering? You gonna get a defender? I think I will For change one of the Chalobah? defenders for sure. No, I think I'll sell Tarkowski before Chalobah. Chalobah plays Everton 31 and he'll give me 2 points. So I'll keep him for those 2 points, and I might get Van Dijk or Hill. I like one of them. Or midfield, I've not decided. I like Wilson, but I don't want to sell Rice immediately. I think he's okay for the next couple of weeks, but I'll see. I'll wait for some news. अगर Wirtz की कुछ news आती है तो I might punt on Wirtz. The original plan was to get him, but I'm not sure whether he's fit, whether he's injured, or whether he's worth selling Rice for as well. So we'll wait and see. Yeah, मैं वही सोच रहा था कि the good gains you made were because of these heroes you had, right? Defenders. Chalobah and Yeah. Tarkowski, and both of them have fallen off like really bad over the last 5-6 weeks or something. Yeah, दोनों से कुछ भी नहीं आया है. And that is why my rank is difference also not basically. improving. Yeah. This is my team. I have gotten Harry Wilson for Declan Rice, so Rice is going to score this week. A lot of differentials अगर आप template से देखोगे, but कोई कुछ करता नहीं है. Jared Bowen है, I'm going to play him away at Liverpool. Ekitike, I don't know कितनी big chances miss करेगा, but at least एक तो करेगा. फिर Wilson Lau, Sarr, Munoz, double Palace away at United. Gabriel is still there. Guehi, my transfer last week. He created a big chance for Haaland, by the way, बिल्कुल last में, तो उसको assist मिल सकता था. Dubravka at home to Brentford. Look at my bench, Bhatia साहब, मतलब would you play any of these players over some of the starters? Let's say like an NDI over a Bowen, for example. But the thing is कि Bowen defcon देता है. No, I'll definitely play Bowen. Bowen has to start. West Ham have looked good, and Liverpool have not been that impressive. So I think West Ham might even get a 1-1 or a result from this fixture. So Bowen को तो definitely start करें. Everton have actually looked worse recent weeks. Yeah. And so Bowen तो बनता है खिलाना. And Timber in place of who? मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है आर्सेनल की क्लीन शीट पे ना, नहीं है. I think you can consider Timber in place of Guehi, but because I don't think City I keeps a just have clean more sheet. faith in, मेरे को आर्सेनल पे भी नहीं है. देखो जब से न्यू मैनेजर आया ना, चेल्सी डिफेंसिवली स्ट्रगल कर रही है, बट अटैक वाइज they score every game. Yeah. एंड मेरे को आर्सेनल पे भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो क्लीन शीट रखेगी. क्यों कॉन्फिडेंस होगा, राइट? किस चीज का कॉन्फिडेंस होगा कि मैं डबल क्लीन शीट खिलाऊं? एंड जैसे ये सीजन जा रहा है, लाइक you getting random away clean sheets, right? Look at Van Dijk, look at United, all these teams. Like, क्या पता सिटी away रख ले यार, away at Leeds clean sheet 1-0 निकाल ले, क्या पता? हो सकता है. I don't know. मेरे को I think team looks good on paper, yeah. You don't have to change much. तो हर वीक लगती है. Captain, I think I'm gonna, before I completely lose it, I still gonna go with थोड़ा सा reliability, because it's not like कि there are other players in my team जो कर रहे हैं जिनको मैं कर सकता था. Look at last week, right? मैं कोई भी player captain करता, सब blank करते.
So it's not like कि कोई दूसरे players are doing something. So Yeah. I'm just probably gonna go with Bruno only. Home match है. But let me think about it. The only other player जो मैं सोच रहा हूँ might be Harry Wilson. It could be a Yeah. great shout. You never know. It might work. एक आध free kick मार दे, which he's known for. But my question was, you have plenty of players who are blanking in 31. Firstly, do we need to play 11 in 31? Because people are targeting filling their starting 11 with players who play. And आपका क्या plan है? Do you have like 4 or 5 of them not playing? कब निकालने वाले हो या क्या करने वाले हो? Yeah, so I have 5, 2 Palace, 1 Guehi and 2 Arsenal. But I removed Rice this week, so एक कम हो गया. एक तो there is no guarantee firstly कि City Palace will be a blank, because अगर City हार जाती है to Newcastle in the FA Cup, it might not be a blank. There is no reason कि वो fixture उस week में नहीं जा सकता है. So I'm hoping कि Newcastle जीत जाए ताकि City और Palace, अगर City और Palace का मैच हो गया I'm sorted, क्योंकि मेरे पास डबल Palace है. So that's okay. उसके अलावा भाटिया साहब, आई डोंट थिंक यू नीड 11 प्लेयर्स, बिकॉज अगर आप अगर आप हर वीक अपनी टीम देखोगे, आपके 2-3 प्लेयर्स विल गिव यू पॉइंट्स, उसके अलावा एवरीवन विल ब्लैंक. सो मेरे हिसाब से तो आप ला सकते हो, यू कैन फिल इन 11 प्लेयर्स, बट मोस्ट ऑफ देम विल ब्लैंक एनीवेज. इट्स द सॉर्ट ऑफ सीजन जो ये रहा है. तो अगर आपके पास 10 अच्छे प्लेयर हैं, अगर आपका 9 अच्छे प्लेयर हैं, तो मे बी हिट ला के अगर आपको फील है किसी प्लेयर की, आप ला सकते हो, डिपेंडिंग ऑन वॉट योर स्ट्रेटजी इज. बट आई वुड नॉट, I would not consider some players for the next 3 weeks just because they don't have a fixture in 31. Yeah. If you have good feeling about some players, let's say a Nico Riley, for example, right? If you want to get in someone like him, you want to get in a Semenyo, all these players, तो मुझे लगता है that should not put you off. Even a Munoz मैं तो बोलूँगा, because he's a reliable asset, he will do well. तो मेरे को नहीं लगता कि वो एक मैच से इतना आपको पुट ऑफ होना चाहिए, क्योंकि वो मोस्ट लाइकली एनीवेज जो आपका प्लेयर होगा उस प्लेयर की जगह वो वैसे ही ब्लैंक करेगा. It's a matter of 2-3 points. Look at the defenders, by the way, in 31. जो अगर आप free hit कर रहे हो 31 में, for example, you will struggle to pick 3 defenders also from that week. And most of them will give you 1 to 2 points. So is it really worth banging your head over that 1 or 2 points that week? Lottery अगर आपका hit हो गई तो हो गई, but there is no guarantee कि होगी. So it's okay. मतलब 9-10 players, if you have the right players, it's okay. यही वीक देख लो ना, हमारे मरन के बीच में एक 17 पॉइंटर का फर्क है फ्रॉम निको रैली. दैट्स इट. एक प्लेयर का फर्क है, ओनली 1 प्लेयर. पीपल हैव वैन डाइक, देयर ऑन ग्रीन एरोज ऑटोमेटिकली. डजंट मैटर कि बाकी 10 प्लेयर क्या हैं. नहीं है तो रेड है तो ग्रीन है. ऐसा ही रहा ये सीजन. It's been very low scoring last few weeks as well. I think average 35, 40, 45. I can't remember a week where I scored 50 plus points. I think double में आया था, वो भी उसमें भी रेड आया हुआ है with a triple captain. Crazy. So it's just hard to predict anyone doing well. So I think hold what you have, एक आध punt लो and थोड़े मजे करो FPL में, because points तो किसी मजे करो यार, बिल्कुल मजे करो, जो मन है वो लाओ. Go wild, go get your Chardes and Ryans. Exactly. They will also not do anything. And हाँ, वो ज़्यादा फील है. That player बहुत मजा आता है. आपका पंट पिक अच्छा करता है ना, जिसकी गट फील है उसको लेके आओ, वो 1-2 गोल मारता है ना, जो हाई मिलती है ना उससे, वो टेम्पलेट पिक से नहीं मिलती. बिल्कुल. बट द थिंग इज कि जो आप लाओगे वो भी कुछ नहीं करेगा, जो दूसरा वाला आपको लाना था वो भी कुछ नहीं करेगा. ये हाईली लाइकली जो आपके दोस्त के पास प्लेयर है वो अच्छा करेगा बस. स्टोरी ऑफ द सीजन. या मैन, इट्स बीन एब्सोल्युटली ब्रूटल मैन. That's about it. भाटिया साहब, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करिए, दुख साथ में बांटेंगे हम लोग. लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट एज वेल. छिप्पर साहब नहीं आए हैं पॉड में, ही इज नॉट वेल. बहाना है सब कुछ. ही इतनी हाई रैंक पे आ चुका है मनन की उसको ट्रांसफर रिवील नहीं करने. एंड वो बोल रहे हैं कि हम छोटे लोगों के साथ फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते. ही इज बिजी टॉकिंग, ही इज ऑन द फोन टू पेप राइट नाउ डिस्कसिंग स्ट्रेटजीज फॉर द लीड्स गेम. सो चिप्पर साहब को अगर आपको उनसे एडवाइस या सजेशंस चाहिए तो टेलीग्राम पे मिलेंगे. जॉइन अस देयर. Absolutely. And the only thing is, जो उसने हमें रिवील करी है भाटिया साहब की, he's going to make 4 transfers this week. Potentially 4 transfers. So he's going to hit 100 points. Definitely. Sir, 120 से कम नहीं आएंगे. Yeah.
ठीक है दोस्तों, थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग. लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर इट विद द फ्रेंड्स एज वेल. जॉइन द टेलीग्राम चैनल एंड उसके अलावा दोस्तों ऑल द बेस्ट फॉर गेम वीक 28. 28. Fuck that shit. May your arrows not be red. Fuck all of you.